Good morning, Assalamu alaikum to all of my 7th standard students, 7A and 7B. Once again, warmly welcome to in the Google class, okay? और आप सब बच्चों को जैसे पहले हमने इंग्लिश के लेसन को हमने रीड किया related to the part of different exercise. Now just our new chapter start in social studies today. Chapter number 1, just to recap, we read about a geography of the Muslim world, about the geography of Muslim world, Muslim status, Muslim features क्या थे Muslim world में इन countries के उसके बाद by percentage we read about the different religions and other in the next page we read about the information about the maps about their structure and question answers. Okay, मैंने आपको question answers का बताया था कि I personally prepared the question answer related to the your exercise. I just shared with you in your group, students group में वो मैं आपसे share कर लूँगा और उसके बारे में मैंने आपको बता दिया था कि आपने notebook पे कैसे काम करना है. Okay, now just open your books and open your books. Chapter number 2, the topic is today's climatic regions of the Muslim world. इस मुस्लिम दुनिया में, हमारे मुस्लिम वर्ल्ड में, मुस्लिम दुनिया में जो यहाँ का climatic regions हैं वो क्या हैं? What about the climatic region? About one thing more important, about their deserts, आप पढ़ेंगे बुक में, about their deserts, oceans, lakes, rivers, okay, semi-deserts, forests, okay, tropical rainforest, the variety of tropical, temperate deserts. What about that? हम आहिस्ता आहिस्ता deserts को पढ़ेंगे. One thing is most important for all of you कि आप लोगों को मैंने पहले दिन से बताया था कि जैसे ही हमारा लेसन स्टार्ट हो, जैसे हम उसकी बिगनिंग करें, आप लोगों ने अपने रफ रजिस्टर पे by using your रफ रजिस्टर without ring bang नैरो लाइन रजिस्टर्स पे आप लोगों ने मार्जिन लाइन लगा के सेंटर में लाइन ड्रॉ करके अपने डिफरेंशिएट टर्म्स को साथ साथ वन बाय वन निकालते जाना ताकि आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन का वेटेज, आप लोगों के वन वर्ड का आंसर, क्वेश्चन बेस और आपके डिफरेंशिएट टर्म्स जो हैं वो क्लियर हो जाए. ओके, नाउ जस्ट ओपन योर बुक एंड टेक योर हाइलाइटर और कलरफुल हाइलाइटर और लेड पेंसिल जो भी आपके पास अवेलेबल है. वी रीड अबाउट द डेजर्ट्स. डेजर्ट्स कहते हैं सहरा को, रेगिस्तान को, अ सैंडी प्लेस. ओके, you read about deserts in grade 5, grades 5, in grade 5, in grade 6, in science and social studies too. तो स्पेशली जो आपके पावर पॉइंट जो बैक क्लास के हैं उनको फॉरन अपने माइंड में क्लिक किया करें कि कहाँ वो अटैच होते हैं. ओके, you have already read about deserts in book 1, that's true. Okay, now start from here. Apart from some places where water can be reached from underground sources, deserts have hardly any agriculture output, but some one of them have immensely valuable minerals such as oil. अब ये है कि जैसे सऊदी अरब में आप लोग देखें, मैंने आपको उसके क्लाइमेट का बताया था, हार्श हार्ड माउंटेनियस है क्लाइमेट का रीजन क्या वहाँ पे बहुत सारे ऐसे डेजर्ट्स हैं जहाँ से सऊदी हुकूमत जो है उनकी पेट्रो जो खास करके इंडस्ट्री है वो क्रूड ऑयल वहाँ से निकालते हैं. अच्छा, अगर हमारे यहाँ देखें डेजर्ट्स हैं थल, थर, चोलिस्तान इन पाकिस्तान, हमारे यहाँ वो वैरायटी अवेलेबल नहीं है, वो मिनरल ऑयल अवेलेबल नहीं है डेजर्ट्स में क्योंकि डेजर्ट्स का क्लाइमेट हार्श है, हार्ड है, एक्सट्रीमली हॉट है, लेस रेनफॉल. ठीक है, फिर एनिमल्स वहाँ पे जो है वो बहुत कम होते हैं. वहाँ का एनवायरनमेंट अगर आप लोग देखें भी जस्ट कीनली ऑब्जर्व अबाउट द एनवायरनमेंट ऑफ डेजर्ट, दैट इज हार्श. ओके, वेरी डिफिकल्ट. पीपल जो वहाँ पे रहते हैं, लोग रहते हैं, दे कैन सर्वाइव वेरी डिफिकल्ट लाइफ, बट वो सर्वाइव कर जाते हैं क्योंकि वो वहाँ के अडेप्टेड होते हैं, आदी होते हैं. मैंने ओसिस का आपको लास्ट लेसन में बताया था हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन डेजर्ट एंड ओसिस. सऊदीया में चले जाए तो वहाँ पे नखलिस्तान कहते हैं उसको, कि वहाँ पे थोड़ा सा पानी होता है, थोड़ा सा एक लिटली स्मॉल लेक होता है, वेल होते हैं. ठीक है, वहाँ पे जो उनके डेट्स ट्रीज अवेलेबल होते हैं वहाँ पे. और जिप्सिस पीपल के बारे में बताया था जिन्हें हम खाना बदोश कहते हैं. नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक में मैंने वो टर्म आपको क्लियर किया था कि उनका क्या रोल होता है, कौन कहाँ कितनी देर रहता है, कौन कहाँ कितनी देर नहीं रहता, कहाँ माइग्रेट करता है, उसका क्या रोल है. सिमिलर डेजर्ट्स को उसने डिफाइन किया, डेजर्ट्स इन्वायरमेंट, डेजर्ट स्ट्रैटेजीज एक्सप्लेन की हैं. आप डेजर्ट्स की जो डेफिनेशन मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर करूँ, आप वो लिख लें, विद एग्जांपल लिखें, जिससे आप लोगों का एग्जाम में जो क्वेश्चन जब आता है कि डिफाइन डेजर्ट और हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन अ डेजर्ट और अ सेमी डेजर्ट, इट मीन योर टर्म इज क्लियर, योर डेफिनेशन इज क्लियर, योर आंसर इज क्लियर, योर एग्जाम्पल इज क्लियर, देन यू गॉट एग्जैक्ट marks. Okay, the Muslim world seems to have been allocated more than its share of deserts, almost 3/4. Please underline, यहाँ से आपने highlight करना है. Almost 3/4
of all major deserts in the world are in the Muslim territories. तकरीबन 3/4 डेजर्ट जो है इसको मुस्लिम यानी इस मुस्लिम कंट्रीज में इंक्लूडिंग गल्फ कंट्रीज टू वो MCQs के लिए आंसर हाईलाइट करें 3/4 तक ऑक्यूपाई है. These are in Sahara. These are the Sahara in Africa. Underline please. Which makes up the 60% of the total desert area in the world. Sahara Desert is one of the well-renowned famous desert. There have been Thar and Somalia deserts in Kazakhstan, in Uzbekistan, and Dasht-e-Lat in Iran. Please highlight this whole paragraph. Semi-desert and scrubland. So what about the semi-desert and scrubland? This has occasional rain. जहाँ पे कभी कभार बारिश होती है, रोजाना नहीं होती, यूजुअली नहीं होती, रूटीन में नहीं होती, कभी कभार. But not enough for crops, and it's not enough for crops. यहाँ पे crops के लिए enough नहीं होता. फसलों की जो पैदावार, the production of crops, वो यहाँ पे proper नहीं हो पाती. Like ordinary desert, जितना कि ordinary deserts को अगर हम लोग compare करें, as compared to the daytime temperature is high. Obviously आपको पता है कि temperature जो है sands अपना deserts का daytime extremely high होता है, hot होता है, warm होता है. लेकिन जैसे जैसे temperature जो है रात होती है तो रात को जो deserts हैं sandy बेशक हैं लेकिन वहाँ पे temperature जो है वो cold हो जाता है, cold nights शुरू हो जाती हैं. ये लिखा हुआ है. And the nights are often cool. Please underline this. Those tough plants and shrubs grow as tough plants. You take example of cactus. Flowering plant नहीं है लेकिन plant है, वहाँ grow होता है. It's covered with the spikes. इसकी thick coat waxing होती है. ये वहाँ पे available होता है in deserts में. Flowers available नहीं होते. ये क्या possible है कि वहाँ पे sunflower grow, rose grow? No, not at all. Okay. Any further fertility? आप just watch the source. इस सहारा in Libya. ये लिबिया ये मुस्लिम country है. उसका एक सोर्स लगाया गया. It's totally sandy. There's no any fertility. There's no any tree. There's no any flower. There's no any mountains. Totally sandy. Retla. Okay. And there's one more picture. The third desert in Pakistan. There are 3 deserts in Pakistan: Thar, and Cholistan. Okay. The third desert in Pakistan. Just watch and compare both of deserts. What about the dark soil? What about the light soil of sandy soil? Okay, you read about sandy soil in plant growth, sandy soil, loamy soil, clay soil, okay, in plant growth in grade 6. And literally parts of some tough plants जिनके सख्त होते हैं, spikes होते हैं, thorns होते हैं, कांटे होते हैं, और उन्हें आप लोग आम हाथ से, not you use your common hands to cut them. Maximum people try to use a different harder weapons cutter होते हैं उनके पास, जिससे उनको hardly जो है वो कट कर लेते हैं. Okay. Long roots which grow down. Long roots उनकी जड़ें लंबी होती हैं. Long roots, you read about roots in discovering plant too, which go down to whatever water exists below the surface. Please underline this. They are only real used for agriculture. They are only used for the agriculture resource. Agriculture resource में कहाँ काम आता है? Wandering animal, क्योंकि जो आपको मैंने पहले बताया था, nomadic के semi nomadic लोग होते हैं जो deserts में रहते हैं, they just kept animal with them. उनके animals होते हैं like camel, horse, sheep, goat. ये उनके local animals होते हैं जिन्हें वो वहाँ पे मतलब अपने साथ रखते हैं, अपनी यूज़ में रखते हैं. आप लोग अक्सर देखें कि मोस्टली देखने में आता है कि जब बड़ी ईद आती है, जब ईद उल ज़ुहा आता है, तो बहुत सारे रेयर एनिमल्स हमारे पंजाब में हमारे लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट के थ्रू यहाँ पर आते हैं, जहाँ से हम जानवर लेने जाते हैं. रेयर एनिमल्स, आप जब टॉकिंग अबाउट द रियल एनिमल्स एंड फार्म एनिमल्स टू. रेयर एनिमल्स वो होते हैं जो इन जिप्सीज लोगों ने या ये नोमैडिक के सेमी नोमैडिक लोगों ने अपने पाले होते हैं, वो उनकी केयर करते हैं, उन्हें अच्छा फूड देते हैं, उन्हें अच्छा स्टफ देते हैं, उनकी केयर करते हैं. वो एनिमल बड़ा हेल्थी होता है, उसको देखने में इसमें अट्रैक्शन होती है. उससे मेरे को मालूम हो जाता है कि ये एनिमल जो है ना वाकई एक गुड लुकिंग है. और गुड लुकिंग का मतलब ये नहीं है कि वो बड़ा हैंडसम है. इट मीन्स दैट हेल्थी एनिमल, उसका जो मीट, उसका फ्लैश उसके अंदर बना होगा, अल्लाह ताला ने बनाया होगा, वो बड़ा हेल्थी होगा क्योंकि उसको फूड अच्छा मिला होगा. वो जिस एनवायरनमेंट से बिल्टअप होकर हमारे पास आता है, प्रिपेयर होकर आता है, वो एनवायरनमेंट वाकई बड़ा उन जानवर, और वो जानवर जो होते हैं उस टफ एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर लेते हैं. दे कैन ईजिली सर्वाइव इन द टफ एनवायरनमेंट. ओके, लाइक यू टेक द एग्जांपल ऑफ स्पेशली गॉड्स एंड शीप. Sheep singular is sheep and plural is also sheep. These are available of Pakistan because these early animals give hard, okay, underline please, hard, tough wool. Animals not used for only meat. Animals different eatable animals जो हमारे खाने में हम लोग यूज़ करते हैं, हलाल जानवर,
उनके बहुत सारे अदर स्टफ्स काम आते हैं, लाइक देयर वूल, like their leather skin used in different purpose, like their wool used in different purpose. We can eat their meat, हम उनका गोश्त खाते हैं, ठीक है, which is excellent, and which wool is more than excellent for carpet industry, handmade carpet, जो कॉटेज इंडस्ट्री में अगर आप लोग देखें, जैसे ईरान में, टर्की में, ओके, अफगानिस्तान में हैंडमेड कारपेट्स का ट्रेंड बहुत है। इवन पाकिस्तान में भी हैंडमेड ट्रेंड जो बलूचिस्तान में बनाए जाते हैं, बड़े अच्छे रग्स हैं, कालीन्स हैं, उनको बड़ा अच्छा बनाया जाता है, डेकोरेट किया जाता है। कॉटेज इंडस्ट्री जो कि घरों में रहने वाली ख़वातीन जो होती हैं, जो डोमेस्टिकेटेड लेडी होती हैं, वो इस पर काम करती हैं, घरेलू ख़वातीन जो होती हैं, ओके, फॉर मेकिंग कारपेट्स। एंड सम पार्ट्स ऑफ द वेस्टर्न पाकिस्तान आर सेमी डेजर्ट्स, सम पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान are based on western Pakistan are semi-desert. On the next page, just to watch about the grassland, vegetation, wildlife, and there is a bird, ostrich is a bird, और ये grasslands है। grasslands किसको कहते हैं? What is meant by that? मैंने बार बार आपको बताया कि जैसे ही आपका चैप्टर जब कंप्लीट होगा, इसके कंप्लीट होने तक या उसके ड्यूरेशन ऑफ कंप्लीट से पहले आई विल सेंड योर डेफिनेशन टास्क और योर डिफरेंशिएट टास्क मैं आप लोगों को बता देता हूँ इन योर ग्रुप, इन योर स्टूडेंट्स ग्रुप। Tropical grassland. You read about tropical rainforest, tropical forest in grade 5, in grade 6 too. Now we will discuss about the tropical grassland. Grassland किसको कहते हैं? Okay. These are usually found between. Okay. These are usually. Please highlight this. These are usually found between the desert and tropical forest. इनके between वस्त में दरमियान में माबैन पाया जाता है। They are warm. Obviously they are warm throughout the year. सारा साल यहाँ पे गर्मी रहती है। Through the year, throughout the year. Underline please, warm throughout the year, but have only a small amount of rain, a little bit rain, a small amount of rain. Please mention this amount of rain, 500 to 15 millimeter. Mm shows millimeter. It's the rain average, 500 to 15 millimeter, a small amount of rain, which falls between the April and September. ये तकरीबन अगर बारिश होती भी है तो अप्रैल से, जैसे हमारे यहाँ मानसून आपको पढ़ने को मिलेगा, मानसून सीजन स्टार्ट होता है जुलाई, अगस्त, सितंबर तक कंटिन्यू होता है। इसी तरह इन रेंज का जो समर रेंज है थोड़ी सी, ये स्टार्ट होती है अप्रैल एंड सितंबर फ्रॉम नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। अंडरलाइन प्लीज, दे हैव स्कैटर्ड ट्रीज एंड बुशेस कहते हैं झाड़ियों को, एंड लॉन्ग ग्रास, और लंबी लंबी घासें होती हैं, स्कैटर बिखरी हुई झाड़ियाँ होती हैं, स्कैटर होती हैं, बिखरी हुई होती हैं, रैंडम होती हैं, बेतरतीब होती हैं, उनकी कोई तरतीब नहीं होती, अरेंज नहीं होती, ओके। In Africa, country name Africa, such grasslands are home to game animal. Africa में basically African history को हम अगर read करें, Africa country को read करें, we read about more interesting variation regarding their environment and regarding their physical features. इन्हीं features में वो कहता है कि ये animals grassland उनका home है, habitat है। You read about habitat in grade 4 कि हर animal का एक अपना ज़ाती जो उसका पर्सनल हैबिटेट होता है। यू आर ह्यूमन पर्सन, यू लिव इन अ हाउस, आपके इर्द गिर्द के हैबिटेट को देखें, क्या आप जहाँ रहते हैं, यू लिव इन अ हाउस नियर बाय अ पार्क, क्या आप लोगों की स्ट्रेटजीज है जो यूज़ करते हैं। एनिमल्स मेंशन हियर बैफलोस, वाइल्ड बैफलोस आर बैफलोस, ज़ेब्रास, जिराफ, एलिफेंट्स, एंटोस, लायंस एंड टाइगर्स। दे आर द वैरायटी ऑफ एनिमल्स इन, ठीक है, एनिमल्स अवेलेबल देयर, एंड हैव अ फ्लॉरिशिंग टूरिस्ट इंडस्ट्री, और टूरिस्ट इंडस्ट्री इनकी बहुत लेविश है। ज़ाहिर है कि अगर हम लोग ग्रासलैंड्स को देखना चाहते हैं या डेजर्ट्स को देखना चाहते हैं, तो अगर हम अफ्रीका जाते हैं, वीज़ा हम लोग यूज़ करके अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी गवर्नमेंट पॉलिसी टू अप्लाई फॉर अ वीज़ा, टूरिज़म इंडस्ट्री स्ट्रॉन्ग होती है, तो आपको वहाँ के जो टूरिस्ट होते हैं, लोकल टूरिस्ट होते हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से हायर किए जाते हैं, वो आपको बहुत अच्छा इसका विजिट करवाते हैं, एंड दे कैन ब्रीफ यू वेरी वेल, ओके, विद हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड ऑफ पीपल गोइंग टू सफारी। सफारी पार्क इज वन ऑफ द वेल renowned famous park, safari park, to watch the animals, different variety of animals. Pakistan once had a lot of this type of climate and vegetation. Please underline climate and vegetation, climate and vegetation, but now almost none is left, maximum is left now. It's a different factors, soil erosion, deforestation, we read about in grade 4, okay, in habitat chapter. The land has been cleared and with extra water from irrigation, okay, all kinds of crops are grown on it. This is simply specify about the tropical grassland कि पाकिस्तान में अगर ये इशू है तो डिफॉरेस्टेशन, सॉइल erosion
की वजह से हमें बहुत सारी चीज़ें हमारी जो है वो ख़त्म हो रही हैं, जिससे हमारे अब अगर नॉर्थन एरियाज़ में हम लोग जाके देखें, जो माउंटेन्स हैं, माउंटेनियस प्लेस हमारी हैं, वहाँ पे लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा होटल्स, प्लाजाज, बिल्डिंग्स, पार्क्स, गार्डन्स, फिर इवन रोड्स बनाने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से वहाँ पर अब जो एक एनिमल हैबिटेट है वो स्पॉइल हो चुका है, नेचुरल हैबिटेट जो वो ख़त्म हो चुका है, और वहाँ पे ह्यूमन जो डेवलपमेंट है वो ज़्यादा देखने को मिलता है. Tropical forest, you read about tropical forest and tropical rain forest in grade 5. Okay, once again repeated in, आपने अगर वहाँ डिटेल में पढ़ा था, ये फर्दर आपको उसकी इंफॉर्मेशन और मिलेगी. In the Muslim world, मुस्लिम दुनिया में these are found. Okay, please highlight tropical where you could found, capable to read about very easily. You found tropical rainforest in Central Africa along the equator. Equator term you can read in grade 5 and 6 too. And in Southeast Asia, underline please, Southeast Asia, there is a heavy rain. यहाँ बहुत ज़्यादा thick rain होता है, heavy rain होता है, from 1800 to 25 millimeter, and the temperature remains between 20 degree to 30 degree Celsius तक रहता है all year. आपने ऊपर थ्रू आउट भी पढ़ा कि वो वार्म रहता है, इसका टेम्परेचर इतना रहता है. नेचुरली कुदरती तौर पे there is a thick forest. It's one of the large thick canopy like trees you can find in tropical rainforest, and they can block sunlight. उनकी हाइट इतनी बड़ी होती है, इतनी ऊंचाई पे होते हैं, लॉन्ग उनकी हाइट होती है, और थिक वेजिटेशन होती है, थिक प्लांट्स, बड़े बड़े ट्री, ह्यूज ट्रीज, लार्जेस्ट ट्रीज यू कैन बी फाउंड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. ओके, ह्यूज वेजिटेशन, बड़ी बड़ी वेजिटेशन होती है, उनके लीव्स, उनके फ्लावर्स फैले होते हैं. Climbers up you can find there, creepers you can find there, shrubs different, and the crown of leaves, जो पत्ते ये देखिए, you can also be take this example with the help of resource, a rainforest in Malaysia. If you want to further get information, I many times asked to you through my lectures and in different times in classes too, just to use YouTube encyclopedia, and please watch National Geographic channels which are totally based. The channel is totally based on English, not in Urdu documentary, not in Urdu dub. English-based topics you can be find through Google, on YouTube, and find after finding these lectures you can listen them. आप उन्हें सुने कि tropical rainforest का क्या अहमियत है. Researchers वहाँ पे जो National Geographical teams वहाँ पर जाती हैं, वो क्या research करते हैं? What about the animals? What about the leaves? What about the swamp? What about the water? What about the insects? What about the reptiles? There are a huge variety of these kind of animals, reptiles, insects, birds. आपको इतनी वैरायटी मिलती है पढ़ने की कि आप उसको पढ़ेंगे तो आपका खुद ब खुद उसमें इंटरेस्ट डेवलप होगा. ओके, लेकिन फिलहाल तो अपनी बुक की हद तक अगर आप इसको पढ़ लें तो आप सबकी बड़ी मेहरबानी होगी. आई एम रियली ग्रेट थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू. अगर अपनी बुक को आप लोग इतना डीपली पढ़ लें तो मैं आपका बड़ा ही आसान बन लूँगा पूरी 7A और 7B का. ओके, then it is semi-darkness, please underline please, it is semi-darkness with giant creepers. You read about creepers and climbers, Arab and shrubs in grade 4 too. Twining up the tree trunks to reach the sunlight above. Tree trunks यानी कि जो tree होता है, आपने बार के बारे में पढ़ा होगा in different classes, especially in discovery plant. And tree trunks, अब tree के trunks होते हैं अल्लाह ताला की तरफ से जो इसको मजबूत बनाते हैं. और ट्रीज तो वैसी जो नेचुरली ट्रीज हमें नेचर में मिलते हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग ग्रोथ होती है उनकी. यू टेक सच एज एग्जांपल आई मेंशन. ओके, द मेन स्टेम्स ऑफ सम क्रीपर्स कैन बी मच एज 30 to 40 centimeter in diameter. Please highlight this answer for MCQs. And one thing is most important, many times I say one thing is most important, that when I say this thing is important for objective used in different purposes. One word answer, fill in the blanks, riddle answer, okay, match the column, okay, tufa statement. जिसको आप रिजर्व मत समझें कि अगर कह दिया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर फिल इन द ब्लैंक्स तो आप अपने माइंड में ग्रैब कर लें शायद ये आंसर फिल इन द ब्लैंक्स नहीं आना है. ऐसा नहीं है. रीडिंग करते वक्त जिन टारगेट्स को हाईलाइट कराया जाता है, इट मीन दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर डिफरेंट पर्पस व्हेन वी प्रिपेयर योर असेसमेंट, व्हेन यू प्रिपेयर योर क्लास टेस्ट, व्हेन यू प्रिपेयर योर मिड ईयर और फाइनल पेपर. ओके, the main form of the life found here are birds, live creatures like their birds, reptiles, insects, okay, animals like birds and monkeys उसने mention किया है. In the canopy the leaves, please highlight this meaning, the leaves at the top उसकी ऊंचाई को कहते हैं, ऊंचे पे. Snakes, lizards and insects, okay.
मच ऑफ द फॉरेस्ट इज वेरी वेलेबल फॉर, वेलेबल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंसिव और रेयर जो वहाँ की स्पेशलिटी है, वहाँ के ट्री अवेलेबल है, टिम्बर वहाँ से हासिल होता है, सच एज टीक एंड अदर हार्डवुड्स विच इज़ यूज फॉर द डिफरेंट पर्पसेज, फॉर फर्नीचर यूज, फॉर डेकोरेशन यूज, फॉर इंटीरियर यूज, फॉर डिफरेंट अदर पर्पसेज जो वहाँ के लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। Where these have been cut down and the forest cleared, यही रीज़न है डिफॉरेस्टेशन की, दैट इज द एग्जैक्ट पॉइंट कि अगर उन थिक रेन फॉरेस्ट से अगर ये चीज़ों को रिमूव किया जा रहा है जिससे एनिमल्स का जो नेचुरल हैबिटेट है वो एक्सपाइल हो रहा है। हैबिटेट क्यों एक्सपाइल हो रहा है कि ज़ाहिर है एक नेचुरल हैबिटेट, एक बर्ड, ठीक है, वो ह्यूज उस ट्री की किसी एक ब्रांच के अंदर अपना उसने नेस्ट बनाया हुआ है, घर में रहता है, लेकिन जैसे ही लैंड रिमूव होती है सब कुछ ख़त्म हो जाता है, बर्ड्स का घर ख़त्म हो गया, अगर उनकी फैमिली एक्सपाइल होगी, ख़त्म होगी, दे हैव टू मूव सम वन प्लेस, उन्हें कहीं और जगह मूव करना पड़ेगा, और कहीं चले जाएंगे। ओके, वेयर दिस हैव बीन कट डाउन and the forest cleared, sugar cane, okay, cocoa, rubber, mangoes, pineapple and other tropical forests. Tropical forests mean only base tropical forests which are grown only in these areas because of the heat and क्योंकि रीज़न उसमें हीट की और उसमें जो इन्वायरमेंट है उसका बड़ा रोल होता है। जैसे अगर हम लोग कराची में चल जाएं तो हमें जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जैसे हम ये पढ़ें तो हमें ट्रॉपिकल फ्रूट्स वहाँ पे अवेलेबल होंगे इन कराची कोकोनट यू कैन इजीली फाइंड देयर, ओके, यू कैन फाइंड पाइनएप्पल देयर, यू कैन फाइंड द पपाया, पपीता जिसको कहते हैं, ये मैंने अपने लास्ट लेसन में बताया था, क्योंकि उसकी वजह कि सी ब्रीज की वजह से वो वहाँ पे ज़्यादा हेल्थी ग्रो होता है। फिर इसके अलावा ये जो तुलसी का पौधा जो है वो वहाँ मिलता है, इंडिया में बहुत अवेलेबल होता है क्योंकि वो जहाँ पे ट्रॉपिकल सी मतलब ओशंस होंगे वहाँ पे होता है। और अगर आप देखें अक्सर ये जो कुकिंग शोज़ होते हैं उसके अंदर जो कुकिंग करते हुए जो डिफरेंट शेफ़ होते हैं वो यूज़ करते हैं ये दाल वगैरह को तड़का लगाने के लिए, तेज़पात का पत्ता होता है, ठीक है, वो यूज़ करते हैं, वो नेचुरल होता है, कई घरों में भी ग्रो होता है। ओके, ये बस लास्ट लाइन लगी मेरी, अंडरलाइन कर लें। ओके, वो कह रहे हैं बिकॉज ऑफ द हीट एंड द रेन फॉरेस्ट आर जनरली अनहेल्थी, या अनहेल्थी होते हैं विद मैनी डिजीजेज दैट अफेक्ट द ह्यूमन एंड एनिमल्स। अगर इंसान वहाँ पे जाते हैं, अगर रिसर्चर्स जाते हैं, बड़ी केयर करते हैं कि कोई एनिमल बाइट ना कर ले, स्पेशली कोई इंसर्ट ना कर ले, कोई रिप्टाइल ना कर ले, क्यों कि अनहेल्थी होते हैं, कोई बीमारी ना हो जाए, कोई पॉइजन ना बॉडी में फैल जाए, डेथ ना हो जाए। मैनी ऑफ दीज सच एज मलेरिया, जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर इन्फेक्शन फैलेगा वो मलेरिया का होगा। सपोज जैसे आपने देखा हो डेंगी है, डेंगी रेन फॉरेस्ट में बहुत पाया जाता है इधर, और स्पेशली इन इंडिया, श्रीलंका, बर्मा, वियतनाम, यहाँ चूँकि ये चीज़ पाए जाते हैं तो यहाँ पे ये डिजीज़ बहुत है, लेकिन वो लोग इस डिजीज़ से नहीं डरते, उन्होंने अब इसका क्रू सीख लिया हुआ है। अगर आप देखें कि हमारे अपने पाकिस्तान में जब डेंगी आया तो एक अलार्मिंग सिचुएशन बन गई, लेकिन फौरी तौर पे इन कंट्रीज़ के जो डॉक्टर्स हैं, जिनका इन कंट्रीज़ की जो स्टैंडर्ड डॉक्टर्स हैं, जिनके रिसर्चर्स हैं, उनको पाकिस्तान बुलाया गया और फ़ौरन उसके क्रू के बारे में उस वक्त की गवर्नमेंट ने इसके बारे में फ़ौरन हल सोचा क्या है। ये एक लॉन्ग डिबेट है, बाद में डिस्कस करेंगे। और मलेरिया इसका डिजीज़ है जो फैलता है, आर कैरिड बाय इंसेक्ट्स, मॉस्किटोज के काटने पे, ये डिफरेंट किसी इंसेक्ट्स के काटने पे मलेरिया फैलता है। हाउएवर द रेन फॉरेस्ट, प्लीज अंडरलाइन, आर वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पेज नंबर 6, इंपॉर्टेंट फॉर द प्लांट्स फॉर रिप्लेनिशिंग द एयर एंड ऑक्सीजन, ये इसकी एक क्वालिटी है, एडजेक्टिवली इसमें यूज़ किया गया है। And absorbing the carbon dioxide, although not in the Muslim world, a great Amazon rainforest, underline please, a great Amazon rainforest in South America is believed to supply half of the world atmosphere with oxygen, क्योंकि trees जो ये plants जो ये forest है ये lungs कहलाते हैं। ज़ाहिर जब ऑक्सीजन हेल्थ करते हैं अपने अंदर, हम ऑक्सीजन के लिए हमारे लंग्स का बड़ा रोल होता है, ये भी एक लंग्स है, नेचुरल लंग्स, जिनको कैसे यूटिलाइज करते हैं। तो ये स्टेटमेंट वो कह रहे हैं, आल्दो नॉट इन द मुस्लिम वर्ल्ड द ग्रेट अमेज़न फॉरेस्ट इन द साउथ अमेरिका इज बिलीव, वो लोग बिलीव करते हैं, इस चीज़ को ओपनली डिक्लेयर करते हैं, इनको बिलीफ है, ईमान है, इत्तेकाद है, टू सप्लाई हाफ द वर्ल्ड्स एटमॉस्फेयर विद ऑक्सीजन। नेक्स्ट हम लोग इंशाल्लाह ताला आपके नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे। जितना आज मैंने आपको पढ़ाया है, आपको लेसन पढ़ाया है, इसकी टर्म्स जो हैं मैंने हेडिंग आपको लिख के दी है, राइट द डिफरेंस बिटवीन दिस गिवन टर्म्स एंड टर्म्स। ओके, आपने कोई क्वेश्चन लिखना है अपने पर्सनली मेंशन द डेट टॉपिक हेडिंग ऑन रफ रजिस्टर, आई एम टॉकिंग अबाउट रफ रजिस्टर। ओके, देन यू ड्रा मार्जिन लाइन ऑन बोथ ऑफ साइड एंड ड्रा अ लाइन इन अ सेंटर। या आप लोगों को बहुत सारे लोगों की प्रैक्टिस की है, जिनकी नहीं है उन्होंने इसको साथ साथ अपनी टर्म्स को क्लियर करना है, ठीक है। जितनी टर्म्स जो मैंने आज बताई हैं वो आपने साथ साथ ही लिख लेनी है इसके अंदर, लाइक डेजर्ट्स, सैंडी डेजर्ट्स,
Okay. Scrubs, oasis and scrub. प्लीज आपने इसके दरमियान में जगह छोड़ लेनी है, 4 to 5 लाइन छोड़ के आपने, क्योंकि मेरे पास बोर्ड में इतनी स्पेस नहीं है, आपने ऐसे नहीं करना कि ये हेडिंग दे लेनी है फिर नीचे लिखना है, नो। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, please be careful about spelling mistakes and use only a black pointer for heading. Tropical grassland, tropical forest,